Hi again. So today we are going to do miscellaneous complex examples, and we are going to do miscellaneous examples and miscellaneous exercise, and we're gonna finish this chapter in this video itself today, and then we're gonna move on to the PNC permutation combination. चलो तो start करते हैं. We are going to do complex number. We have already done the theory of the chapter. After the theory of the chapter, we have done the first exercise also. Now there are miscellaneous examples and then miscellaneous exercise. So let's start over here without any further wait. So miscellaneous examples, the very first question, let's see, is here. So this is the question. Another good thing about this chapter that it just have one exercise on miscellaneous. That's all. So you can do this chapter within 1 hour or half an hour itself. चलो तो start करते हैं बेटा. So find the conjugate of this. As you can see, we need to simplify this first. So let's simplify. So this is the number, complex number. I hope you have gone through the first video of the theory. If not, you can check in the playlist, class 11th playlist. So if I solve this, let's multiply inside, right? So if I multiply 6 plus 9 iota minus 4 iota minus plus is minus 6 iota square over 1 into 2 is 2 minus iota plus 4 iota minus plus is minus 2 iota square, right? So if I do this and I take it here, so 6 plus 5 iota square is minus 1 if you recall, so this is plus 6 over, then we have 2 plus 3 iota. If you remember, iota square is minus 1. So plus 2 minus 1 is plus. So 12 plus 5 iota over 4 plus 3 iota. Now here we have to rationalize it because it's in the iota is in denominator. So if we rationalize this, now let's multiply the numerators. So we are going to multiply this with this. And a plus b minus b is a square minus b square, right? So a square minus b square. So when we simplify, again we are open the bracket. So 12 times 4 is 48 minus 36 iota plus 20 iota minus plus is minus and 15 iota square. Now 4 square is 16 minus iota square. So iota square is minus 1. So plus 9 it will be. So this guy will be now 48 and iota square is minus 1. So minus minus plus 15. And for the imaginary part, minus 16 iota over 25. So if I have to simplify it further, 13, 5, 63 minus 16 iota over 25. So if I have to write in the standard form, this is 63 by 25 minus 16 iota by 25. So that is the complex number that we got. Now the question is find the conjugate of whatever we simplified. So conjugate is nothing but changing the sign, right? This conjugate. So if we change the sign of the imaginary part, this will be plus 16 by 25 iota. And that is our answer. We can cross check as here 63 by 25 plus 16 by 25 iota. So that is the first part, first example. Let's move on to the next example here. Okay, before I move on to this example, there's one concept which is going to be used again and again in the miscellaneous. So I want you to understand this further first. So let's say if I have a plus iota b is equal to whatever, let's say 2, okay, and a minus iota b is equal to 3. So, no, a plus iota b is equal to, let's say, 3 plus iota 5, okay. So a minus iota b, if I have to write a minus iota b, let's switch on the fan. Okay. If I have to write a minus iota b, I will replace this with minus iota, right? So you can either understand in this manner, either have taken conjugate on both sides, replacing iota by minus iota, whatever you want to feel like. Now, whenever you want a square plus b square, you will take first and second and you'll multiply these two. Because if I multiply these two, what is going to happen? Right hand side will also get multiplied. I'm not worried about that right now. I'm here trying to make you understand this concept. So a plus b minus b is a square minus b square. So what will happen here? The iota square is minus 1 b square. So minus minus will come plus. So whenever you have to fetch square sum, you have to take the product.
First, you have to replace iota by minus iota, and then you have to multiply. Whatever answer here, also we will get a square minus a square minus b square. Okay. So if you have understood this concept, let's do questions based on these first. Okay. From the example, from the exercise, all the questions which are based on this concept, which is replacing iota by minus iota and then multiplying in order to get that square wala thing. Okay. चलो तो करते हैं. This is my question. I have to prove. See, can you see x square plus y square? That means these guys needs to be replaced. Like replacing iota, you can say, you can literally write this, replacing iota by minus iota. So when you do that, minus iota here. So here also what will happen? Iota की जगह minus iota. So यहाँ पे अब iota की जगह minus minus plus हो जाएगा ये. ठीक है. तो आपके पास x plus iota y given था. This was it. I replaced iota with minus iota, or I took conjugate on both sides. Now this is 1 and this is 2. Now if I multiply 1 with 2, what will happen? X plus iota y will multiply with x minus iota y. And over here, a minus iota, a plus iota b over a minus iota b will get multiplied with a minus iota b over a plus iota b. If that is the case again, sorry, iota is there. A plus b, a minus b, this will become x square plus y square. Just the case we did. A square plus y square. A square plus b square. Now over here, a plus b, a minus, which is a square plus b, a square minus b square, but iota square will make it b square, right? I hope you are getting what I'm trying to do. Over here, आगे पीछे लिखने से it doesn't matter. Again, we'll get the same thing, and this will cancel and become 1, and hence proved. That's how easy it is. Okay, so we are going to do all types of these first. जिसमें we have to replace iota with minus iota. ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा बाबू. ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें मिल गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो उसके तरह हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले. आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है वो तो ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए उसका स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब डेफिनेटली वही वाला टाइप है. तो यहाँ पे मेरे पास ये गिवन है बेटा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस आयोटा, रिप्लेस आयोटा by minus iota. If I do that, this iota with minus iota, what will happen? Minus 1 will become plus, or I am taking conjugate on both sides. So this become signs will get opposite. Now this is 1 and this is 2. Multiplying 1 by 2, multiplying 1 by 2. Oh, my handwriting, please bear with it. So when you multiply, the LHS will become x square plus y square. You know it. Now root के अंदर, if we have root m into root n, beta, what happens? It becomes root m into n. So if I multiply a minus iota b, c plus iota d, and with that, this will get multiplied inside. And you know the drill. Whenever is a plus b, a minus b, it actually doesn't become a square minus 1 in iota की respect में, because iota square becomes minus 1 and gives minus minus plus. So b square हो जाएगा और यहाँ पे c square plus d square हो जाएगा. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और इधर क्या है? कुछ नहीं. अगर ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा? ये होल स्क्वायर. So this will become whole square and the answer will be this guy right over here. So this is our this part, which is this part. As you can see, we have proved. Again, if you'll see question number 6 is of the same kind. You will see again a plus iota b is equal to x plus iota whole square over 2x square plus 1. So you can see a square plus b square. So I am going to replace iota by minus iota. If I do that, this will be a minus iota b, and here x minus iota, right? Square over 2x square plus 1. Don't do it in the denominator. There is no complex number in the denominator. It's an algebraic expression. Now, this is 1 and this is 2. 1 and this is 2. So if I multiply them, you know the left hand side will become, this is not cross this multiplication. If I multiply, they will become a square plus b square. That is pretty sure. Now on the right hand side, if I am doing it, the denominators are repeated and the numerators, what is going on? X plus iota square, x minus iota square. So this will be 2x square plus 1 का होल स्क्वायर नीचे. अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा है ए बी का स्क्वायर है ऐसे, तो क्या वो बट नहीं जाता है ऐसे? मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है बेटा, प्लस में नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें आइडेंटिटी लगती है. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मान लो ए है, ये बी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि 2 into 3 का स्क्वायर बताओ भाई, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐसे भी करो फिर भी 36 आएगा. 4 into 9 36. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस गाय लाइक दिस, का होल स्क्वायर. और नीचे तो होल स्क्वायर बन ही गया बेटा, तो नीचे तो अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो जो चाहिए था वी हैव गॉटन दैट.
So in the numerator now what we have a plus b and a minus, which is a square minus b square, but iota square plus कर देता है तो x square plus 1 and 2x square plus 1 का whole square, and LHS is going on this way. So this is the proof that was required and we are done. So you have seen that numerous times we can do such type. There is another question like that. I recall a huge expression. So if we do pattern wise, it's pretty easy. This exercise is pretty easy. So let's go on to this one. I hope you can see. So we have a plus iota b, c plus iota d, e plus iota a, and you can see a square plus b square is being done. So you'll write replacing iota by minus iota. I think you have understood what needs to be done in such sorts of question. E minus, e minus, or taking conjugate on both sides also you can say. So a minus iota b. Now let's say this is expression is 1 and this is 2. When you multiply, obviously a minus b, a plus b for every guy it will become, and it will become like this, something like this, which is required, which is the required proof in this question. G square plus b square and is equal to a square plus b square. And we are done with that kind of questions. So 4 questions in the exercise and I think 1 in the example, 5 almost. So those are the type of questions. Miscellaneous examples are done. Let's come to the exercise now. We'll do number question wise. Another type, I shall do it before I do on to the evaluating. There is another type in which there is an expression and it will say proved as Z1, Z2 ka real imaginary part, something like that. So how to do that? Let's see. Question number 2 first we'll do. That is another type. For any two complex numbers, let's say Z1 is a complex number, x1 plus iota y1, and Z2 is a complex number. You can take a1 and b1 say if you want, x2 plus iota y2. Now Z1 into Z2 का real part हमें देखना है तो पहले Z1 into Z2 तो कर ले. So let's do Z1 into Z2. That is, we are multiplying these two. If I multiply x1 plus iota y1 with this guy, what will happen? Let's open the brackets. X1, x2, and plus x1, y2 iota plus iota x2, y1 plus iota square will become minus and y1, y2. So if I have to write in a better way, z1, z2, the real part is nothing but x1, x2 minus y1, y2. And if I look at the imaginary part, this is x1, y2 plus x2, y1, right? So now if I ask you what is the real part and imaginary part of this, so you know this is the real part, right? So real part, that is the LHS I'm trying to figure out. So if you see the real part of Z1, Z2, which is this guy, x1, x2 minus y1, y2. And you already know that x1 is the real part of Z1. If you see, real part of Z1 is x1 and imaginary part of Z1 is y1. Real part of Z2 is x2 and imaginary part of Z2 is y2. If that is the case, you can see everything is going on like that only. Real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of Z1, imaginary part of Z2. ये तो prove करना था and we are done. So hence proved. Okay. So this is how we are going to do such questions. Another kind of this one I have seen somewhere. Here we go. Question number 7. We have Z1 is equal to 2 minus iota. It's not typically that type, but okay. So, and Z2 is there of minus 2 plus iota. Okay. So we have to real, actually 90% that type. Okay. Real of Z1, Z2 over Z1 के ऊपर बार. तो पहले जब भी किसी का रियल इमेजिनरी पूछे बेटा, फर्स्ट यू सिंप्लीफाई, फर्स्ट यू गेट दैट एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, देन ओनली यू कैन गेट द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट. Z1 into Z2, Z1 into Z2, gladly this time they have given, and Z1 का conjugate मीन इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट? सो नो, कैंसिल मत कर देना, -2 अब पर मल्टीप्लाई करो, minus for very carefully, plus 2 iota, minus minus plus 2 iota, minus plus minus, iota square is -1. So -1 will give this plus 2 plus iota. So this guy is a -3 plus 4 iota over 2 plus iota. We never like imaginary part in the denominator. So we rationalize. When we rationalize, we multiply the numerator, -6 plus 3 iota plus 8 iota. Minus plus is minus, but iota square will make it plus.
So plus 4. And a plus b minus b is a square minus b square, but iota square will make it plus. So we have what? We have minus 2 plus 5 iota over 5. If I have to write this guy, z1, z2 upon z bar conjugate that we have done, right? That was the expression. Z bar is. So if I write it separately, the real part and the imaginary part, right, which is iota only. So what I'm supposed to do, supposed to write the real part of this. So real part of z1, z2 by z1 ka bar will be minus 2 upon 5. And if someone asks me the imaginary part, are they asking? No, they are not asking. They're only the real part they're asking, which is minus 2 by 5. And if I go for the minus second part, which is imaginary part of 1 by z1 ka bar, right? क्या आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार होता है. डू यू नो दिस? इफ यू नो दिस कुड बी डन फास्टर. हाउ? सी, Z1, ये आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले टॉपिक में, थ्योरी चैप्टर, थ्योरी पार्ट में, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो Z1 इंटू Z1 का बार विल बी Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर. ओके, सो पहले Z1 का मॉडुलस निकालें. मॉडुलस क्या होगा Z1 का? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, स्क्वायर रूट ऑफ 5. और मॉडुलस ऑफ Z1 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, 5 आ जाएगा. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमें इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया. कौन सा एक्सप्रेशन आ गया? ये मेरा एक्सप्रेशन ये वाला आया बेटा, 5 जो आया है. ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 इज 0. सो आंसर विल बी 0. ओके, सो दिस इज द बेटर वे टू डू इट. कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे फॉर्मूले से सीधा कर सकते हो आप. सो दिस टाइप इज ऑल्सो डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऐसे करके. अब इवैल्यूएशन टाइप पे चलते हैं. इसमें इवैल्यूएशन काफी करना पड़ता है. इवैल्यूएशन काफी मतलब सिंप्लीफाई करना होता है. आपको ये सॉल्व करना है तो पहले हमेशा अंदर वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी बोले करने का. ठीक है, सो आयोटिक पावर 18 आपको पता है कि पहले आप 4 की डिजिबिलिटी से करते हो. 4 4 16 प्लस 2, थ्योरी वाला पहला वीडियो देखने का. 1 की पावर 25 1, आयोटिक पावर 25, सो 6, सॉरी 4 टाइम्स 6 प्लस 1, राइट, का क्यूब. आपको पता है दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर. वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन आयोटा का क्यूब. Iota square, we know what is iota square, it is minus 1. And we also know 1 upon iota is minus iota. कैसे आप इसको रेशलाइज कर लो? आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस ऊपर गया तो माइनस आयोटा. इसका क्यूब करना है तो माइनस कॉमन निकाल के क्यूब कर दो. अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा जी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, दैट इज द a प्लस बी होल क्यूब. सो 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, b प्लस 3 ab स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1. सो माइनस 1 आयोटा क्यूब. व्हाट इज आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लो माइनस आयोटा. सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. माइनस आयोटा काउंट, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा, minus plus is minus 3, so this is minus minus 2 plus 2 iota, right? माइनस अंदर चले गया, 2 माइनस 2 आयोटा विल बी द आंसर, क्योंकि अंदर माइनस जाएगा, माइनस वन प्लस वन आएगा, माइनस प्लस माइनस, दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो ये सिंप्लीफाई वाला टाइप कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड टाइप में कर लिया था. अब हम थर्ड की तरफ चल रहे हैं. थर्ड वाला देखो फिर से सिंप्लीफाई वाला टाइप है. फोर्थ भी हमने कर लिया है, आपको पता हो तो. चलिए थर्ड वाला करते हैं. लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. Reduce this guy to the standard form. Again, we will simplify, simplify, simplify. Let's simplify. So when we multiply, we'll take the multiplication. ऐसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे. ठीक है, ऐसे एलसीएम करते हैं. 1 प्लस आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा माइनस 2, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे माइनस के आगे, ये तो साइन चेंजिंग नहीं हो पाएगा. तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा, माइनस प्लस इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर विच इज प्लस. सो 3 minus 4 iota by 5 plus iota. Now let's solve this guy.
So this will be minus 1 plus 9 iota. Makes sense. So this will be 5 minus 3 iota and 3 minus 4 iota, 5 plus iota. I need to cross check this minus 1. It feels a little weird. Okay, maybe my bad. Okay, so let's multiply it at the numerator. Minus 3 minus 1 into this is plus 4 iota plus 27 iota, if I'm not wrong, and minus 36 iota square, which will make it plus 36 over a plus, no, not a plus b minus b. This is 3. So 25 plus 5 iota minus 15 iota minus 3 iota square, which will make it plus 3. So this guy will be 33 plus 31 iota. अच्छा थोड़ा थोड़ा अब अच्छा अच्छा फील हो रहा है, देखो ही नंबर लग रहे हैं. So this will be 28 minus 10 iota. अब इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, वी विल रेशनलाइज. कॉम्प्लेक्स मिसलेनियस है तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी देगा, लेकिन प्रोसेस इज सेम. कितने ही बड़े नंबर दे दें हमें. 33 प्लस 31 आयोटा को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 28 प्लस 10 आयोटा. बाय द वे वी कैन टेक 2 कॉमन इफ यू वांट टू, इट विल मेक इट कैलकुलेशन इजी, बट ओके. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई. ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 33 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो. कर लो. 24 6 8 8 4 4 2 9 9 टू 4 9 टू 4 प्लस 330 आयोटा. एंड देन 31 को 28 से कर लो. सो उसके बाद देन दिस 33 प्लस 31 आयोटा विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस आयोटा into 28 plus 10 iota. Now 28 into 28 is 784. Minus iota square will make it plus, so 100 will come plus 100. When you multiply 33 with 20, it will get 924. I hope so. 6, 7, 8, 23, 6, 7, 8. So 4, 12, 924. And plus this will 330 iota. This will be 28. We are multiplying with 31. 8, 2, 24, 6, 8, 868 iota. And this will be, iota square will become minus 310 over 884. Now let's simplify this. So when we simplify, what will happens? Let's see. So 924 subtracted with what? With this. So 4, 310 से subtract करें 1 and 6, 614. And then we add 868 with 330, right? So 8, 9 and 11, 1198 iota over 884. I can see that they are getting divided by 2. 2 you can take out common, so 307 plus 5 and then 9 and then again 9 iota over 884. So यहाँ पे 2442 हो जाएगा and that is our answer. Pretty interesting calculation, right? So इसको 2-3 बार practice करना calculation, you'll get the final answer as this one. Okay, let's move on to the next question. Evaluation वाला टाइप कर रहे हैं हम, ये reduce कर लिया standard form में. अब हम कर रहे हैं fifth question. We have already done the fifth question, fourth question, right? एक टाइप में अब ये करते हैं. Z1 is 2 minus iota. Z2 is 1 plus iota. We have to find modulus of Z1 plus Z2 plus 1 over Z1 minus Z2 plus 1. इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे जो भी आएगा. तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस 1. Z1 प्लस Z2 दोनों को प्लस करना है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे. 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1. 2 माइनस आयोटा माइनस लगा दिया तो दूसरे वाले पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1. तो देखो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा गया, 2 प्लस 1 विच विल बी 4. और यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 1. देखो माइनस 1 से ये वाला 1 गया, तो 2 माइनस 2 आयोटा. ओके, ना 2 कॉमन निकाल के ऊपर से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस आयोटा. इसको रैशनलाइज कर लो. सो ऊपर हो जाएगा ट्वाइस प्लस 2 आयोटा. और यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 बन जाएगा. तो भाई ये जो है 2 कॉमन रहने दो, और यहाँ पे 2 तो ये कट गया, 1 प्लस आयोटा आ गया भाई सिंप्लीफाई करके. तो अब इसका मॉडुलस निकालना है 1 प्लस आयोटा का. तो मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2. सो √2 विल बी द आंसर. दैट्स ऑल.
Okay, so this is done. Root 2. This is also done. This is also done. As to the this one, I hope you remember the equality वाला क्वेश्चन. So यहाँ पे क्या होता है, अगर अच्छा दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हैं तो उसका मतलब ये है इसका रियल पार्ट जो है इक्वल होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा. पहली बात. इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं. हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहले एक्सप्रेशन ये जो है ये किसका कंजुगेट है. ये इसका कंजुगेट है. तो मतलब अगर मैं इसका कंजुगेट करूंगा तो 6 - 6 प्लस ये हो जाएगा कि इसका कंजुगेट है. ये इसका कंजुगेट है. इस वाले का तो कंजुगेट कर दिया. दोनों इक्वल होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो. ओपन करो 15x. राइट. 3x प्लस सो नॉट 15 5. व्हाट इज गोइंग इन माय हेड. 5x आयोटा. दिस विल -3y iota. Then minus plus is -5y iota square will make it plus. Okay, algebraic expression. So 3x plus 5y iota common. 5x minus 3y is equal to -6 plus 24 iota. I hope this is clear. Okay. Now, since they are equal, so their imaginary part and real part must be equal. That implies 3x plus 5y must be equal to -6 and 5x minus 3y must be equal to 24. अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप इसको क्या करें. 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15. तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सेम. So we do that, the expression will change to 15x plus 25y minus 30, and this will be 15x minus 9y is equal to 72. Let's add, subtract them, plus, minus, cancel. 25 plus 9 is 34y, and this will be minus 102. Now y will come out to be minus 102 over 34, which is 217, 251, 51. So y is coming out to be minus 51 by 17. I need to cross check whether this is correct or not. Otherwise, we'll give it a try because feels like wrong, right? Feels like wrong. So, 102. Oh, 17 3 is 51, right? तो -3 हो जाएगा ना. -3. y will be -3. That's why I was like इसमें -3 आ रहा है. So -3 हो गया और सिंप्लीफाई हो जाएगा. So now आगे -3 को हम प्लग कर देंगे किसी भी इक्वेशन. लेट्स से मैं इस वाली इक्वेशन में प्लग कर देता हूँ फर्स्ट वाली में. So y की वैल्यू -3 प्लग इन कर दो. So 3x minus 15 is equal to -6. So 3x is equal to -6 plus 15. So 3x equal to 9 and x will be 9 by 3, that is 3. So -3 और 3 आ रहा है. बिल्कुल सही है. 3 and -3 is the answer. x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है -3. And that is equality पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. Question number 8 is also done. Let's move on to the question number 9. In question number 9, we have to find the modulus of this guy. 1 plus iota, 1 minus iota. तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद मॉडुलस निकाल देंगे. क्रॉस मॉड एलसीएम ऐसे लेते हैं. सो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा. और नीचे ए माइनस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 1 प्लस 1 हो जाएगा. 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab over 2. Iota square is -1. Cancel. 2 iota minus. Iota square is -1. 1 से -1 cancel. Minus minus plus 2 iota by 2. So 4 iota by 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 iota. 2 iota अगर मेरे को मॉडुलस निकालना है बेटा तो इसका मॉडुलस क्या होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. 0 का स्क्वायर है 0. सो ये तो 2 ही हो जाएगा. सो 2 आएगा इसका आंसर. द आंसर फॉर दिस गाय विल बी 2. सो 9th is also done. Let's see further. So 9th is also done. We are going to do 10th, 11th, 12th, and 14th. 10th, 11th, 12th, and 14th. Let's do that. So x plus iota y का होल क्यूब हमें u प्लस आयोटा भी. देखो फिर से इक्वालिटी के ऊपर है क्वेश्चन. फिर हम ये देखेंगे. पहले इसको देखें इससे क्या होता है. इक्वालिटी से एक्स वाई की वैल्यू आएंगी. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² is equal to u plus iota v. So this is x cube. Iota cube is minus iota y.
cube, and this will be plus 3x square y iota. Iota square is -1, so 3xy square is equal to u plus iota v. नाउ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, -3 ये रियल पार्ट हुआ, और इधर इमेजिनरी पार्ट अगर मैं आयोटा कॉमन निकालता हूँ 3x² y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। सिंस दे आर इक्वल, सो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। अभी अभी करा था हमने ऐसे क्वेश्चन। सो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यू वाला, और फिर हमारा वी जो पार्ट होगा इसके इक्वल होगा। अगर मैं एलएचएस अब उठाऊं, एलएचएस में क्या एक्सप्रेशन है कि यू बाय एक्स प्लस वी बाय बाय करना है, तो यू बाय एक्स प्लस वी बाय बाय वाई करते हैं। एलएचएस ये एक्सप्रेशन है ना, देखते हैं क्या आरएचएस के बराबर आता है। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर बाय एक्स करना है, और 3x² वाई माइनस वाई क्यूब बाय एक्स करना है। ऊपर से एक्स जो है कॉमन इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी, सॉरी वाई है, एक्स नहीं होगा नीचे, यहाँ वाई है, देखिए वाई है। सो वाई कट जाएगा कॉमन निकाल के, तो यहाँ पे x² ये बचेगा। अब क्या हुआ, हमारे पास बचा x² प्लस 4x² हो गया, और -4y² 4 कॉमन आ गया। एंड दिस इज द आरएचएस एज यू कैन ऑब्जर्व, हेंस प्रूफ। तो इक्वालिटी से पहले हमने u भी निकाल लिया और फिर डिवाइड कर दिया जैसा भी हमें दे रखा था, और वी गॉट द एक्सप्रेशन, वेरी इजी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार आता है बेटा ये। बीटा वन दे रखा है आपको 1, बीटा वन का मॉडुलस 1 दे रखा है, कहता है कि बताओ बीटा माइनस अल्फा, ए नहीं है अल्फा है, अपॉन 1 - अल्फा बीटा, ये ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है मॉडुलस इंटू मॉडुलस बार होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट, मतलब इस पूरे का कंजुगेट। और आपको पता है कि अगर Z1 बाई Z2 है, उस पूरे पे बार है, तो बट जाता है वो कंजुगेट। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में पढ़ा था। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, 1 - अल्फा बार ये, तो यहाँ पे ही इसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीटा माइनस, ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा बार बीटा का कंजुगेट, जस्ट बेयर विद मी, ओके, ठीक है। अब आपको पता है कि Z, अच्छा आपको ये पता है Z1 - Z2 अगर पूरे पे कंजुगेट है तो कंजुगेट भी बढ़ जाता है बेटा, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में। तो अगर ऐसा है तो ये कंजुगेट बढ़ जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कंजुगेट बटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का बार इज 1, और यहाँ पे अल्फा बार बीटा बार के ऊपर बार आ जाएगा। तो अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ऊपर ओपन कर देते हैं इसको, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, और नीचे 1 - अल्फा बार बीटा, और हमने बार के ऊपर बार, दोनों में बढ़ जाएगा बार, है ना, ये ऐसे दोनों में बार बढ़ जाएगा। आपको कंजुगेट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है, डिवीजन में बढ़ता है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी। सो अल्फा बार का बार क्या होता है, नॉर्मल बनता, एंड बीटा के ऊपर बार, ओके। नाउ लेट्स ओपन द डिनोमिनेटर एज वेल। बीटा, एक और चीज बेटा, बीटा इंटू बीटा बार इज बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, जैसे z इंटू जेड बार इज जेड बार का स्क्वायर। सो ये बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, वहां पे बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार का स्क्वायर, सॉरी अल्फा बार नहीं, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 1 - अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। सो बीटा का स्क्वायर क्या है, बीटा का स्क्वायर क्वेश्चन में बीटा अगर 1 दे रखा मॉडुलस, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आई कैन रिप्लेस दिस विद 1, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस, इसकी वैल्यू नहीं पता है हमें, ओवर 1 - इसको आगे पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूमरेटर की तरह आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बीटा अल्फा बार लिख दिया इसको आगे करके, और इसको नहीं भी करोगे फिर भी आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा बार का स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा 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 बार का स्क्वायर होगा। बीटा बार क्या स्क्वायर होगा, बीटा बार का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, राइट। 1 कैसे होता है, दे रखा है क्वेश्चन में। अब बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आई, ये हमारी वैल्यू इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर की आई, मतलब इसके मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है। तो अगर आप, ये स्क्वायर है तो ये किसका होगा, फिर ये नॉर्मल मॉडुलस भी कितना होगा, 1 होगा, हो गया।
ओके, सो दैट इज आवर आंसर। कि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, प्लस माइनस वन आता है स्क्वायर रूट होके, लेकिन मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन, 12th एंड 14th लेफ्ट। फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस गाय। सबसे पहले वन माइनस आयोटा का, अगर मैं आपसे बोलूं वन माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है बेटा? अगर मैं मॉडुलस बोलूंगा, स्क्वायर रूट क्या होगा? वन प्लस वन, राइट, वन प्लस वन आयोटा, वन का स्क्वायर वन, रूट टू। सो ये टू का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे टू की पावर, कोई इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं इसके फिर तो। जीरो कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा मॉडुलस आया रूट टू। रूट टू की पावर आप कह रहे हो कि एक्स, और यहाँ पे टू की पावर एक्स। सो यहाँ पे टू की पावर हाफ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स। तो ये कब होगा? जब हाफ एक्स इक्वल टू एक्स हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? एक्स बाई टू आया, माइनस एक्स इधर आ गया, तो एक्स बाई टू माइनस ये क्या हो गया? माइनस एक्स बाई टू हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये x इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ? इसमें नॉन इंटीग्रल दे रहा, नो नॉन इंटीग्रल, जीरो सॉल्यूशंस। लेट मी चेक द आंसर। देयर शुडंट बी एनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस गाय। दिस विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 भाई। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसने बोला नॉन जीरो। यहाँ पे अगर नॉन जीरो बोल रहा है तो मतलब सॉल्यूशंस नहीं होंगे, राइट। नॉन जीरो बोल रहा है तो सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए। सो लेट्स चेक। This is miscellaneous of complex number। बिकॉज मैं कुछ भी गलत नहीं कराना चाहता, गलत होगा तो मैं खुद को सही करना चाहता हूँ। दिस इज माय 4.1 का miscellaneous। I'm pretty sure though there won't be any solutions। yes, there are zero, zero solutions। जीरो मतलब नंबर बोल रहा है जीरो, कोई सॉल्यूशंस है ही नहीं इसके, क्योंकि x की वैल्यू जीरो आ रही है आपकी। वो बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो नॉट पॉसिबल, सो दैट जीरो सॉल्यूशंस आर देयर, जीरो सॉल्यूशंस। ओके, चलो तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन ऐसे करके दिखाना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वन प्लस आयोटा, इसमें क्या रहा है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, ताकि ये एम की वैल्यू सेटिस्फाई करे, ठीक है। फोर होती है, लेकिन चलो कर लेते हैं इसको। पहले अंदर वाले को रेशलाइज कर लो। रेशलाइज किया तो ऊपर क्या हो गया? वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और वन प्लस वन बन जाएगा ये। सो वन आयोटा स्क्वायर से ही कटा, टू आयोटा बाई टू, दैट इज आयोटा आया। तो आयोटा की पावर एम है एक्चुअली। और कौन सी लीस्ट वैल्यू है एम की जो वन देती है? फोर देती है। आपको पता है आयोटा की पावर फोर, सो एम की वैल्यू फोर होगी, ठीक है। सो वी आर डन। And each and every question of this exercise has been discussed. Each and every question of the chapter is discussed along with all the examples. That is a perfect playlist for complex number. You can fetch full marks from the NCRT point of view. Okay, thank you. I will see you in the next chapter, that is PNC, permutation combination.